Good morning, children. Practice makes a man perfect. With this well-known proverb, I'll start my today's session of maths. Okay, children, it means it means just doing the things again and again, doing the work again and again that will lead you in perfection. How? As much practice you'll do in maths, especially in maths, that much intelligent you will be. Your memory will sharp. And in maths, we need practice and more practice. मतलब बार बार दोहराना. किसी भी चीज़ को आप बार बार दोहराएंगे. मैथ्स में किसी चैप्टर को, किसी प्रॉब्लम्स को आप बार बार दोहराएंगे, उसे बार बार सॉल्व करेंगे. कितना भी हार्ड प्रॉब्लम होगा वो इजी हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा. ओके, दैट इज वाई इन मैथमेटिक्स वी हैव सो मेनी एक्सरसाइजेस and so many practice set also. Okay, why? Because it develop your thinking skills. As if you do the practice again and again, it will improve your memory, it will sharp your memory also, which will help you to just improve your speed in solving that problem. Math is the subject, as math is the subject, that it is not to learn and write. Okay, it is for doing the things again and again, and in that way only you can get full marks. You know the secret? In examination you can get full marks in mathematics. Okay, so what is today for you? Today I have brain teasers. See that, brain teasers part 1 for you. What is this brain teaser? It's a mixed questions for revision. Brain teasers में क्या होता है children? ये mixed type of questions होते हैं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है. That is only for recapitulation or revision, you can say. Revision, उसी questions को हम लोग mixed objective और subjective type में just revise. Okay, that to clear your mistakes or misconceptions. Let us start. Okay, see that up till now what you have studied. You have studied missing numbers. जो आपने पढ़ लिया है उसी का mixed revision होगा in brain teaser. Okay, because it will sharpen your brain, improve your solving speed. Let us start the first question. Number 1. Write the missing numbers by counting forward. Count backwards and fill in. In set of question A, we have two types of questions. First one, write the missing numbers by counting forward. Forward means आगे की तरफ count करना, and backward means पीछे की तरफ, going down, and forward means going up, ahead. Okay, what numbers we have got? 329, that means 329. After 329, what we have? Which number comes? Let us do it. After 329, we have 330. Then see, we have to get this number. हम लोग को ऐसे बनाना है कि ये नंबर आ जाए. 329, 330, 331. Then after 332. After 332, you know the serial counting? 29, 30, 31, 32. Again 333. Have you got now? Is it clear? Again, as I forgot to put here number 790. Okay,
See that? In the same way, I have to fill there also. 790. Before 790, what comes? Do you remember? 790. 7, 8, 9. 789. I'll write with different color, then you will get. 789. Then 790. Then 791. 792. 793 and 794. Same, the sequence is there. Forward, बढ़ते जाना. Okay. 89, 789, 790, 791, 792 and 793, 94. So on. Okay. Again, question number 2. How will we write? What it says? See that? Count backwards and fill in. We have already completed this chapter in a very easiest way. 48. Snack and ladder activity. Do you remember now? 48, 47. What comes below that? 46. 45. 44. 43. Clear? 48, 47, 46, 45, 44, 43. Okay. Again 101. Before 101. It is 101. Before 101 we have to go back. Okay children, आपको पीछे जाना है. 101 के पहले क्या होता है? 100. Then 99. Then 98. 97 and 96. You're going back like this. If you go ahead, 96, 97, 98, 99, 100 and then 101. Clear? Next question. 7, 6. That is 76. 2-digit number. Let's do what you have to do. We have to count backward. हम लोग को backward count करना है. Okay. Let's do it. 76. 75. Below 6, 5. 74. 73. 72 and 71. Clear? If you count in this way, अब आप ऐसे count कीजिएगा तो क्या आएगा? Forward counting. ये backward है. Okay. 71, 72, 73, 74, 75 and 76. That is forward. And आप उल्टा count करोगे तो ये backward counting हो जाएगा. Okay. Just like this. Now this part is also clear. Forward and backward revision clear. Next, what we have? We have, now write the number names. What you are studying from standard 1 also. Okay. Write the number names for the following. 87. You have to write in letter, alphabetical order. Okay. EIGHTY 87. 92. NINATY 92. What is this? 13. 13. 13. THIRTEEN. Clear? And the last one, that part also you have studied in the beginning. So it is also from there. All the chapters, some questions I have collected and we are doing revision now. 54. FIFTYFOUR. That is 54.
types of questions we have revised? First one, counting forward, counting backwards, and write the number names. See, this type of questions comes in examination. So it's a kind of revision. We are doing that. Next, what we will do? See that. Next part of the question. One by one. That also. Are you remembering? Write the number between. Write the number between. You have to write the number. See the questions. You have to write the number between these two numbers. These two numbers. See that. इन दोनों नंबरों के बीच में जो नंबर आता है वो आपको लिखना है. Between 8 and 10, what comes? 9. Between 19 and 21, what comes? That 20. Again, between 30 and 32. 30, 31, 32. So, 31 will be in the middle. Between 44 and 46, what comes? It comes 45. Clear? So this question was for write the number between. दो नंबर्स दिए गए हैं, उसके बीच के नंबर आपको लिखने होंगे. फाइन. फिर क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है एग्जाम में. कैसे? सी दैट. Write what comes before and after. In this way the question may come. See that? Write what comes before. Before, that means the left side. From your that left side numbers. And after the right side numbers. Before 10. 10 के पहले क्या आता है? Before 10 it 9 comes. After 10 11 comes. क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में. ओके, सो जस्ट टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. बिफोर 15 8 14 comes. Then after 16. Again before 29, what it comes? I have written here. What to write? 37. No, it's a 28. And then 28, 29 and 30. Now you're thinking ma'am is teaching us counting. 99. Before 99, what? 100. What ma'am has written 98. Before 99, 98 comes. And then 100. That is 100. This type of chapter you have studied already. Those who have purchased the book, start filling these kind of questions in your book continuously as according to page number. The next question, see that. The next type of questions, what I have, it is ring the smallest number and write in the space provided. What you have to do? You have to ring. Ring, you know, circle. सर्कल करना है आपको. इन नंबर्स को पहले सर्कल करना है. सभी को नहीं. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा. यू हैव टू रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. स्पेस यहाँ पे दिया गया है आपको. अब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा. देन यू राइट द आंसर. ओके. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. इन नंबर को पढ़ के जो सबसे छोटा नंबर हो इन ईच क्वेश्चंस, द नंबर विच इज स्मॉलेस्ट वन इन ईच क्वेश्चन, यू हैव टू रिंग, यू हैव टू सर्कल एंड यू हैव टू राइट देयर. ओके. 75, 29, 13 and 89. Which one? 75. फर्स्ट विल, जब भी हम लोग कभी नंबर को बड़ा या छोटा देखते हैं तो लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है. 7, 2, 1, 8. ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा होगा. सो 1, 3, 13. फर्स्ट वी हैव टू रिंग इट, सर्कल इट. ओके. रिंग करके आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट हियर. ओके. अगेन 9, 4, 2, 9, 2, 4, 9, 1, 4.
942, 924 and 914. क्या करना है आपको? 942 को करेंगे या 924 को? किसे पहले? बाएं साइड से, अगर लेफ्ट साइड से आप देखते हो तो 9, 9 and 9. नाउ व्हाट टू डू? 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं. ओके, इफ सेम नंबर्स इन ऑल थ्री, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन. ओके, द चिल्ड्रन हु हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर, दे कैन अंडरस्टैंड नाउ. जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, अभी वो रिवाइज कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा. 942, तो 999, तीनों में 9 है. अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? कम टू द टेंस. इट वॉज हंड्रेड्स नंबर, कम टू द टेंस प्लेस. 4, 2, 1. 4 बड़ा है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 4 is the greatest, so 1 is the smallest. Here we could get. Okay, now we have to circle. I have circled here. 914 is the smallest. हमें क्या पता करना है? We have to find out smallest number. 9, 1 and 4. 914. Clear? 191, 219, 912. Okay, in this the same process, left side से count करते हैं. 1, 2, 9. The smallest number 1. तो 191 is the smallest one. आ गया ना आइडिया? आप लोग का बहुत फास्ट अब बनने लगा. Now again 441, 114 and 404. 441, 114, 404. 4 here also, 4 here also. But here what is there? सबसे लेफ्ट साइड के नंबर को पहले देखते हैं. 414, 1. स्मॉलेस्ट देखना है 1. इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 1. 114. Circle and write here 114. Clear? This question is also completed. See that? Now another. Ring the greatest number and write in the space provided. Greatest. There what we did? There we just ring the smallest number. सबसे छोटा नंबर को हम लोगों ने सर्कल किया और फिर से लिखा. Now we'll ring the greatest number and write in the space provided. See that? 256, 498, 156. Let us do it. 256, 490. लेफ्ट साइड नंबर, इधर भी लेफ्ट साइड नंबर. ग्रेटेस्ट के लिए भी लेफ्ट साइड सबसे देखते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए भी लेफ्ट साइड देखते हैं. लेट्स काउंट. 2, 4, 1. 4 is the greatest, 2 smaller, 1 is the smallest. So 498 is the greatest number. We have to ring here also. See that? Ring, and we have to write 498. Again the next question B. 963, 369, 693. Left side numbers. 936, 936. Obviously the 9 is it. See that? 9 is the biggest one. So 963 is the biggest number. Got children? जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आपको बनाना आ जाएगा. ओके, 517, 715, 175. What will happen now? 571. We have to find out the greatest number. Okay, 571. 7 सबसे बड़ा है. अब तो आपको आ गया जल्दी. 715. 715 is the greatest number. Now the next one. 919, 999 and 991. The same 9 we are getting. ये तो हार्ड लग रहा है. Let's start.
चलो इसे सॉल्व करते हैं. 9 here also, 9 here also, and 9 there also. Now what to do? We'll come to the next number. 1 9. Second number 1 9 9. 1 9 9 here also and 9 here also. तो अब ये भी इक्वल इक्वल हो गए. बोथ आर इक्वल. कम टू द नेक्स्ट नंबर नाउ. इन दोनों में अब कंपेयर करते हैं. 999 991. ओके, तो 9 इज द बिगर और 1 इज द बिगर. यहाँ 9 इक्वल हो गया. दैट 9 इज ऑल्सो इक्वल. हंड्रेड्स टेंस बोथ आर इक्वल. नाउ 9 देयर 1. सो विच इज द ग्रेटेस्ट वन? 999. 199. Completed. In that session we have completed. एक और चैप्टर कवर कर लिया हम लोगों ने. बिफोर आफ्टर बिटवीन smallest and greatest number. Now the last what to do? थोड़ा और कर लिया जाए. Okay? Children, I know that when you start making, you start very fast within 10 minutes. Only I am explaining in that much time. Okay? The next. और भी कुछ पढ़ा है आप लोगों ने. See that. What you have studied. क्या पढ़ाया और आप लोगों ने? Put the sign of greater than, less than or equal to comparing number. That all are given in your book beta. When you complete this problem, you can find out this in book also. You can fill all this. This type of question also is given in your book, page number 25 in your maths book. Put the sign of greater than, that is called comparing number. जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे से. See that 100, that is 100 plus 90. Now 100 plus 90, 190. इधर क्या लिखा है? लेफ्ट साइड what we have? 100 plus 90 and right side 199. 190 और 199. Let's solve it. चलो सॉल्व करके देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है. 100 प्लस 90. 100 प्लस 90 को ऐड करेंगे तो 190 होगा. ओके, और 199 है हमारा इधर. सी दैट विच विल बी ग्रेटर, 190 या 199? 99. आई टोल्ड यू ना, the number which is greater, the mouth will open the sign. Mouth ऐसे open रहेगा उधर का. So we will put this sign. 190 is smaller than 199. ये smaller than का sign है. Okay. Next number. So let us put here. Next number 642 and 600 plus 42. Let us see. 642. Again 600 plus 42. 600 में 42 को ऐड किया, प्लस साइन मतलब ऐड करना. यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 1. 600 प्लस 42. 600 में 42 को ऐड करेंगे आप तो क्या मिलेगा? What will you get? 642. Look what I have got. I have got two equal numbers. There also and there also. So which sign I'll put in the middle? I'll put this sign. That is equal to sign. कि दोनों तरफ के नंबर इक्वल हैं. आप ये आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए ऐसे दे दिया 600 plus 42 and 642. Okay, but both types, number of both sides are equal. Next question. 945 and 900 plus 15. Let us do 945. 945 है और 900 plus 15. 900 में कितना ऐड किया है? हाउ मच विल वी ऐड? 15. तो वी विल गेट 915. विच इज ग्रेटर, दिस वन और दिस वन?
हाउ विल वी फाइंड आउट? मैंने अभी बताया आपको. जस्ट बिफोर दैट पहले 100 प्लेस को देखेंगे, इक्वल. देन टेंस प्लेस 4 and 1. 4 इज बिगर, तो जो बड़ा होता है माउथ उधर ओपन रहता है. जो बड़ा रहता है माउथ वो साइन ऐसे रहता है. ओके, दैट इज ग्रेटर देन साइन, लाइक दिस. So we will fill 945 is greater than 915. आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे. ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया है. I've written here after addition. So you will have to write like this. Greater than sign, less than sign, equal to sign. Next, 799, 800 plus 99. What to do? It is very much clear. 799 and 800 plus 99, that is 899. चलो कंपेयर करते हैं. 7 and 8. 8 is the bigger, so open mouth will be like this. It is smaller than sign. 799 is, इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ लिखा. 799 is smaller than 899. Clear? Next, 450 plus 1. 450 plus 1, it is 451. 450 है और एक और ऐड हो गया तो 451 हो गया. Then 451 this side written, right side it is written 451 and left side it is written 450 plus 1. The same thing is there, only it is written in expanded form. Okay, 451, what would be there? Greater than, less than, small, what? Smaller than what? What will be right? 451 and 451, both are equal, so we will put here equal sign. Question of this session as 860 plus 7. 860 plus 7, what will come? See that? 860 plus 7, it would come 867. 867 and 807, what is this? 807. 807, 807. Now again start comparing. फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे. 860 प्लस 7 867 होता है. 800 में 60 में 7 ऐड कीजिएगा तो 867 होगा. देन 807, which is greater or which is smaller? Let's start comparing. 8 8 equal, come to the tens place. 0 6 is greater, so 867. लेफ्ट साइड का नंबर जो ग्रेटर रहेगा माउथ उधर ओपन रहेगा. एरो का माउथ उधर ओपन रहता है. जो ग्रेटर रहता है एरो का माउथ उधर ही ओपन रहता है. ओके, now in our next class we'll discuss another thing as what you have to do. Comparing numbers we have studied. I have 2 homework. See that these books you will do, I am explaining and you will do. Okay, my children have studied these already. See that? What is this? Arrange the numbers in increasing order and decreasing order. 39 73 95 48. इसमें जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट हम लोग पढ़ चुके. दैट ऑल्सो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स भी पढ़ चुके. सबसे छोटा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा से बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा. सबसे छोटा नंबर चुन के यहाँ लिखना है. द स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू राइट हियर, देन एट लास्ट द ग्रेटेस्ट नंबर. इन दिस 39 3794 39 3 के बाद बड़ा कौन है? 48. देन 73 comma, don't forget to put comma, 95. In this way you will complete that one. And decreasing order, that means
घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा. Okay children, you already have just studied this chapter. I have taught you already. That is only for revision. 786, 717, 778. 777 equal 8 1. Now come to the tens. 8 1 7. डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा 8 ज़्यादा है तो 786. उससे कम कौन सा है? 778 and the smallest 717. Just do it carefully and you'll show it to me. Children, you will do all these works as we have discussed it. All these work as your class work. Missing number, forward, backward, number as number names. This one, before, after, between, smallest and greatest, then greater than, less than or equal to, and that you will do yourself. Just try to do. Okay, I think that's all. It's enough. Thank you, children. Just start doing it. Okay, and be very careful.